Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. Well, I'm your GK teacher, Miss Iram Naz, and I welcome all of you in today's lecture. So let us begin our today's work. As you know, my dear students, that these are the two books that you will learn in GK. One is your book, GK book, जिसमें हम साइंस एंड SST के बारे में पढ़ेंगे, और द नेक्स्ट वन इज़ योर GK वर्कबुक जो वेरी सून आपको स्कूल से मिल जाएगा. ठीक है, तो आज का जो हमारा काम है दैट इज़ फ्रॉम द GK बुक. सो टेक आउट योर GK बुक क्विकली. G, my dear ones, so today's task is that we will read unit number 2, Allah, from page number 2. Okay, today's task is that we'll read unit number 2, page number 2. So let us begin our today's work. Before beginning of the unit, what we will do, students, we will learn some new words that you will come across through in this unit. इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो भी आप नए न्यू कीवर्ड्स आपको इसलिए करवाए जाते हैं ताकि कोई भी ऐसा वर्ड जब जब आपको नज़र आए सो यू आर एबल टू रीड इट ईजीली. ओके, सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रैक्टिस दीज कीवर्ड्स 2 to 3 times and you will learn the spelling and memorize these words so that whenever जब भी आपको in future ये words you'll go across through these words तो आप easily इसको recognize भी कर सके और pronounce भी कर सके. ठीक है, let us begin with the first word, Muslim. Muslim, मुस्लिम का क्या मतलब है? मुसलमान. अल्हम्दुलिल्लाह, what are we are मुस्लिम, यानी हम सब कौन है? मुसलमान है. यानी हमारा मज़हब यानी हमारा रिलीजन क्या है? इस्लाम. वेरी गुड. तो जो इस्लाम के मानने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुस्लिम. उर्दू में कहते हैं मुसलमान, इंग्लिश में कहते हैं मुस्लिम. नेक्स्ट फ्लैश कार्ड इज प्रे, यानी दुआ मांगना या दुआ करना. हम किससे दुआ मांगते हैं बच्चों? वेरी गुड, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं. कैन यू सी अ मैन, ही इज प्रेइंग, एंड द स्मॉल किड्स दे आर ऑल्सो प्रेइंग, यानी दुआ मांगना. प्रे. नेक्स्ट वर्ड इज लविंग. लविंग, लविंग का मतलब मोहब्बत, प्यार करने वाला. जैसे हमें पता है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं. Loving. How will you pronounce this word? Loving. Next word is kind. Kind. Kind मतलब caring यानी रहम दिल. जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है, मेहरबान है और बहुत रहम दिल है. तो kind का मतलब रहम दिल. Kind. Next word is earth. अर्थ का मतलब दुनिया, जहाँ हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्थ. आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तमाम चीज़ों को बनाया है. इवन कि ये अर्थ, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो भी अल्लाह ताला ने बनाया है. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? अर्थ. अर्थ. नेक्स्ट वर्ड इज थिंग्स, यानी चीज़ें. आपको जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, ट्रीज, एनिमल्स, सी एनिमल्स एंड लैंड, वाटर, यानी आप जिन भी नेचुरल चीज़ों की, कुदरती चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं. थिंग्स. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? थिंग्स, चीज़ें. नेक्स्ट इज लैंड. लैंड, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं. नेक्स्ट कीवर्ड इज एवरीथिंग. एवरीथिंग. अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग. द ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रेनबो, फायर, लैंड, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज क्रिएटेड बाय अल्लाह. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एवरीथिंग. एवरीथिंग इज मेड, यानी बनाना. मेड यानी अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई. इवन कि हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया है.
आपको नज़र आ रहा है अल्लाह मेड ऑल ऑफ मी, यानी हमारी आँखें, हमारे हैंड्स, हमारा फेस, एवरीथिंग जो हमारी बॉडी में है, तमाम चीज़ें किसने बनाई है, इस दुनिया की तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। मेड, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? मेड. नेक्स्ट वर्ड इज फैमिली. नेक्स्ट वर्ड इज फैमिली. फैमिली कहते हैं अपने करीबी रिश्तेदार को, यानी ख़ानदान के जितने लोग होते हैं उसको हम कहते हैं फैमिली. फैमिली. नेक्स्ट वर्ड इज फादर. फादर. फादर को क्या कहते हैं? जी, वेरी गुड, अब्बू या बाबा, इनको हम कहते हैं फादर. नेक्स्ट इज मदर. मदर. मदर किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अम्मी को, या जिसको कई बच्चे अपनी अम्मी को मामा भी कहते हैं. तो मदर, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? मदर. Well, my dear ones, so these are the new keywords, new flashcard words that you have to practice it again and again. अगर 1 से 2 times से 3 times आपको लगे कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, so you can keep on writing it and repeating it in your rough copies. Once you are able to read these words, तो क्या होगा, जब भी आप ये इस यूनिट को रीड करेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये वर्ड्स पढ़े जाएंगे. ठीक है. The first word is Muslims. Muslims. Next is pray. Pray. Loving. Loving. Kind. Kind. Earth. Earth. Things. Things. Land. Land. Everything. Everything. Made. Made. Family. Family. Father. Father. Mother. Mother. Very good. So let us start the reading. Before beginning of the unit, make sure that you write date and day on top of the page. This is your page number 2 of your GK book, students. So आपने short date ऊपर mention करनी है और आपने HW mention करना है on the middle and in the right hand side आपने क्या mention करना है, आपने day mention करना है. ठीक है. So first of all you will hold your pencil and आपने पेंसिल के साथ उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को साथ साथ अंडरलाइन भी करना है. ठीक है. आपको याद है ना सारे जो डिफ़िकल्ट जो न्यू वर्ड्स हमने लर्न किए थे इस यूनिट में. सो यू विल अंडरलाइन दोज वर्ड्स. ओके. सो लेट अस बिगिन. यूनिट नंबर 2, अल्लाह. वी आर मुस्लिम्स. हम सब मुसलमान हैं. वी प्रे टू अल्लाह. हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं. अल्लाह इज़ वेरी लविंग एंड काइंड. अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मेहरबान हैं. ऑल थिंग्स हैव बीन मेड बाय अल्लाह. इस दुनिया की तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने. ही हैज़ मेड द अर्थ एंड ऑल द थिंग्स ऑन इट. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम चीज़ बनाई है. इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुदरती चीज़ें नज़र आती हैं, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है. अल्लाह हैज़ मेड द लैंड फॉर अस टू लिव ऑन. अल्लाह ने ये ज़मीन हमारे लिए क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है ताकि हम उस पर रह सकें. ही हैज़ मेड एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द लैंड. और इस लैंड पे, इस ज़मीन पे जितनी तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास हैं, एवरीथिंग जो इस लैंड पे नज़र आता है आपको, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं. अल्लाह हैज़ मेड यू. अल्लाह ने आपको बनाया है. ही हैज़ मेड योर मदर. उन्होंने आपके अम्मी को भी बनाया है. एंड फादर. और आपके बाबा, आपके अब्बू को भी बनाया है. एंड योर फैमिली. और आपके करीबी रिश्तेदारों को और ख़ानदान को भी बनाया है. आपने देखा, पढ़ा ये सारा कुछ कि तमाम चीज़ें किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है.
Let's read this unit again. Now hold your pencils and now we will underline the difficult words, okay? We are Muslims. We pray to Allah. Allah is very loving and kind. All the things have been made by Allah. He has made the earth and all the things on it. He has made the land for us to live on. He has made everything that is on the land. Allah has made you. He has made your mother and father and your family. Very good students. तो आपने बिल्कुल इसको 2 to 3 times रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. Well, that's all, my dear students. Do your work neatly and carefully and write the date and day on top of the page. Read and practice the new words again and again, because what I believe that perfect practice makes a student perfect. Okay, this is Miss Iramna signing off, and inshallah I'll see you in my next video lecture. Till then, take care. Allah Hafiz, and thank you so much. Bye bye.